Hello bachcho, let's read the question. Consider the following statements. S1 says number of points where fx is equals to mod of x times signum of 1 minus x square is non-differentiable is 3. S2 says define fx as a times sine of pi by 2 times x plus 1 where x is less than or equal to 0 and fx is tan x minus sin x divided by x cube for x greater than 0. In order that fx be continuous at x equals 0, a should be equal to half. S3 says the set of all points where the function cube root of x square times mod x is differentiable is minus infinity to 0 union 0 to infinity. And statement 4 says S4 says number of points where fx equals to 1 divided by sine inverse of sin x is non-differentiable in the interval 0 to 3 pi is 3. State in order whether S1, S2, S3, S4 are true or false. The options are option A true, 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 false, option B true, 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 option C false, true, true, false और option D true, false, true, true. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. So the first key concept is definition for continuity of a function at a point. तो definition क्या है? A function fx is said to be continuous at x equals a if limit as x goes to a of fx is equal to f of a. अब जो second key concept है, that is the definition for differentiability of a function. That is a function say fx is said to be differentiable at a point say x equals a if limit as x goes to a of fx minus f of a divided by x minus a exists. And if this exists, then derivative of f at a is equal to the value of this limit, that is limit as x goes to a of fx minus f of a divided by x minus a. अब इन दो की कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. सो लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 1. सो S1 कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन fx that is mod of x times signum of 1 minus x square is non-differentiable is 3. So function का definition क्या है? fx is mod of x times signum of 1 minus x square. अभी 1 minus x square is equal to 0 for x equal to 1 and minus 1, and clearly 1 minus x square is greater than 0 for values of x in the interval minus 1 to 1, and lastly we have 1 minus x square less than 0 for x in the interval, so x from minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. तो रिस्पेक्टिवली हम सिग्नम फंक्शन निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का. सो क्या आ जाएगा? सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पीस वाइज डेफिनेशन आ जाएगी. सो फॉर एक्स इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? नेगेटिव, तो सिग्नम आ जाएगा माइनस 1. 0 कहाँ पर आएगा? when x is माइनस 1 और 1, एंड पॉजिटिव 1 कब आ जाएगा? जब x माइनस 1 से 1 के बीच में आएगा. एंड सो देयरफॉर with the help of signum we can now get the definition for function
fx, तो fx क्या आ जाएगा, सी fx इज इक्वल टू mod of x times signum of 1 minus x square. Now fx can be written as mod x times mod of signum of 1 minus x square, and if we now substitute the value for signum, so this fx will be equal to, so this will be 0 when x is equal to minus 1 or 1, and mod x for all the other values of x. So for all the values in the set of real numbers minus 1 and 1. तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? So let's build the graph of the function fx. So suppose here we have the coordinate axes. Here we have x-axis, here we have y-axis. Now here we have point 0, then the concerned points are minus 1, 1. So here we have minus 1, here we have 1. At minus 1 and 1, fx takes value 0. Now for the rest of the values of x, the function is mod x, and the graph will therefore look like this. So here we have at minus 1, here we will have whole, then it goes, then again we have, it goes up, at 1 we have whole, and it moves ahead. Now clearly at x equals minus 1, here we have a jump. At x equals 1, we have a jump, and at x equals 0, here we have a sharp corner. So fx is discontinuous at x equals minus 1 and 1, as we have break at these points, and therefore fx is not differentiable at x equals minus 1 and 1. Also fx is not differentiable at x equals 0. Reason being, at 0 we have sharp corner, as we have sharp corner at x equals 0. Therefore fx has 3 points of non-differentiability. So let's check whether statement 1 S1 is true. S1 says number of points where fx is non-differentiable is 3. So S1 is true. So therefore we can say that S1 is true. अब let's check S2. Statement S2 says कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है and वो continuous बोला गया है. We need to get the value of a for which the function will be continuous. तो for S2, let's write the definition of function. So fx is equal to, function की definition क्या है, a times sin of, so sin of angle क्या दिया गया है, pi by 2 times x plus 1. So here we have pi by 2 times x plus 1 when x is, here we have less than or equal to 0. And the second part is tan x minus sin x divided by x cube when x is greater than 0. So here we have tan x minus
sin x divided by x cube when x is greater than 0. And we are also given fx क्या है, continuous. fx is continuous at x equals 0. अब कंटिन्यूटी अटेन करने के लिए हमें एक की वैल्यू निकालनी है. सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर. सो क्या आ जाएगा, लिमिट एज x गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू f of 0. So let's use these two terms. So क्या आ जाएगा, लिमिट एज x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स. ये लिमिट एवेल्युएट कर लेंगे. सो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या आएगी, टू द राइट ऑफ 0 वी हैव tan x माइनस sin x बाय एक्स क्यूब. सो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एज x गोज टू 0 प्लस ऑफ tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. नाउ लेट्स एवेल्युएट दिस लिमिट. यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर इंडिविजुअल लिमिट्स देखी जाए, न्यूमरेटर में लिमिट इज 0 माइनस 0 दैट इज 0 एंड डिनोमिनेटर में 0. सो दिस लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 0 by 0 form. So what we can do is use L'Hopital's rule. So by L'Hopital's rule क्या आ जाएगा, limit as x goes to 0 plus. So let's first note down the L'Hopital's rule. So L'Hopital's rule says that if we have limit as x goes to a point say a of fx is equal to limit as x goes to a of gx equal to 0, then limit of the form as x goes to a of fx by gx will be equal to limit as x goes to a of f dash x divided by g dash x. f dash x divided by g dash x. Now यहाँ पर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर्ड एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर. अगेन यहाँ पर न्यूमरेटर की लिमिट क्या आती है, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0. सो 0 बाई 0 फॉर्म आता है. वापस लॉपेतास रूल यूज़ करेंगे, आ जाएगा लिमिट एज एक्स गोस टू 0 प्लस डेरिवेटिव ले लेंगे 2 टाइम्स सेक एक्स टाइम्स सेक एक्स टैन एक्स. तो आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर्ड एक्स टाइम्स टैन एक्स देन कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. सो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन एक्स divided by 6x. Again if we check the individual limits, numerator में आ जाएगा 0 and denominator में 0. तो again let's use L'Hopital's rule. So here limit as x goes to 0 plus of. So let's use the product rule of differentiability. So this is 4 times. So here we have second squared x tan squared x. Then we have 2 times second raised to 4x plus cos x divided by 6. Now if we evaluate the limit, this limit is equal to, so here we have 0, 1 and 1. So this is 3 divided by 6, that is half. And now because of continuity of f, we will have f of 0 equal to half. And now f of 0 क्या है, 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, a टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स x प्लस 1. सो हियर वी हैव a टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स 0 प्लस 1 इक्वल्स हाफ. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1. सो a इज इक्वल्स टू हाफ. सो दिस इज आवर कंडीशन फॉर f to be continuous, and so therefore S2 is true. Now let's check S3. S3 की स्टेटमेंट है
कि द पॉइंट्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स mod x is differentiable is minus infinity to 0 union 0 to infinity. So यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड एक्स, लेकिन इस मॉड एक्स को भी ओपन कर लेंगे. सो यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0. एंड यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स आ जाएगा, एंड यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब्ड और क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ये फंक्शन सिमिलर है किसके, mod x के. सो द फंक्शन एफ एक्स इज actually mod x and we know that fx equal to mod x is differentiable everywhere except at x equals 0. So therefore fx is differentiable at x belonging to, so for the interval minus infinity to 0 union 0 to infinity, and therefore S3 is true. Now lastly let's check S4. For S4, now the statement S4 says कि number of points where fx equals to 1 divided by sine inverse of sin x is non-differentiable in the interval 0 to 3 pi is 3. अब यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, fx is equal to 1 divided by sine inverse of sin x and interval is x belonging to कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 पाई, ओपन इंटरवल 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई. अब जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ वहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वहाँ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा. दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर्स होगी ग्राफ पे किसके, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के, वहाँ अगेन द फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल. सो देयरफॉर fx is not defined when sine inverse of sin x is equal to 0. अब वैल्यूज को चेक करने के लिए लेट्स गेट द ग्राफ ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. So the graph looks like this. So this is the graph of function y equal to sine inverse of sin x. तो y कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, पाई पे, then 2 pi पे. 0 and 3 pi are not in our domain. Next, now in the graph of y equal to sine inverse of sin x, we have sharp corners at pi by 2, 3 pi by 2 and 5 pi by 2. See our concerned interval जो है that is open interval 0 से लेके 3 pi तक. अब उस इंटरवल में y equal to sin inverse of sin x 0 pi पे and 2 pi पे हो रहा है, एंड शार्प कॉर्नर्स pi by 2, 3 pi by 2 and 5 pi by 2 पे. तो मतलब जहाँ जहाँ पर फंक्शन
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स 0 हो रहा है, या जहाँ जहाँ पर शार्प कॉर्नर्स है वहाँ वहाँ हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो एफ एक्स इज नॉट differentiable at x equals pi by 2, pi, 3 pi by 2, then we have 2 pi and 5 pi by 2. So therefore 5 points of non-differentiability. So therefore S4 is false. And now these are our answers. S4 is false, then S3 is true, then S2 is true, and we have S1 is true. So the correct option is, so true, 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 false. Option A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.